Hello, everyone. Hope you can see and hear me. I hope I am clearly visible and audible. All right. Okay. So let's get started then. I think I can be seen and heard. So, good afternoon, everyone. Welcome to the Hindu editorial analysis of today. Hi, Alpesh. Hi, Nishita. And hi, Hivan. Hello, Vaishnavi. I am doing great, fantastic. I hope you're doing well as well. Okay, so let's get started. आज का एडिटोरियल बहुत ही ऑन अ लाइट नोट है. ओके, अंडरस्टैंड दैट दीज टाइप ऑफ एडिटोरियल जो आज का एडिटोरियल हम कर रहे हैं, इन टाइप के एडिटोरियल्स में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. You don't have to actually read a lot. Okay, you don't have to actually read a lot. You have to mostly skim in these editorials. तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं उसको आपको बस स्किम करना है. ओके. All right. I am doing fantastic, Vaishnavi. I hope you're doing well as well. I hope you're doing fantastic. So 17th May hai aaj. Let's get started. Can we get started? Shall we? Can we get started? Yes, Alpesh. These might seem the most complex one, but actually are the easiest one. Okay. Economics वाले जितने भी हैं, वो आपको लगेंगे difficult, लेकिन होते बहुत आसान हैं. What the hell? What the hell? Hmm. All right. Ram Ram Nitin, Ram Ram. Hello Kirti, hello. All right, so this is my Telegram channel. अगर अभी तक आपने नहीं join किया मेरा Telegram channel तो please join कर लेना because there are three things happening. One RC per day is happening on the channel. Then you have one idiom per day. Idiom जिसके basis पे I also make quiz. Idiom per day. Then you have one phrasal verb per day. Okay, one phrasal verb per day. All these happen on the channel and then there are quiz based on it. So make sure कि आप join कर ले. बस यही नहीं, मेरे class के link कब हो रहे हैं classes, all that happening will you will get to know on my Telegram channel. All right. So let's get started with the words. बहुत आसान words है, mostly up and down वाले words है. Okay, so things going up, economy going up, and economy falling down. Okay, so numbers going up, percentage going up, and percentage going down. Okay, तो basically यही है passage. आज जल्दी एकदम फटाफट खत्म हो जाएगा because there's not much to be discussed in these type of passage. आप देख लेना खुद से ही. सो हमने बहुत दिन बाद आज एक इकोनॉमिक पैसेज उठाया है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. ओके, सो सबड्यूड का मतलब क्या होता है? सबड्यूड इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब अगर किसी पर्सन
या उनके मैनर के बारे में बात किया जाता है तो क्या होता है, क्वाइट एंड रादर रिफ्लेक्टिव और डिप्रेस्ड। ओके, सो किसी इंसान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या उसके मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हिज एटीट्यूड वाज सबड्यूड। ओके, दैट मीन्स बहुत सोच में वाला एटीट्यूड था या डिप्रेस्ड वाला एटीट्यूड था। ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंसेस सबडूइंग, ओके, फाइनेंसेस सबड्यूड, दैट मीन्स नीचे चला गया। ओके, fell down. Okay, fell down. Okay, so the GDP subdued, the inflation subdued, or anything subduing is basically coming down, falling down. Okay, slumped is again fall heavily. Okay, slumped, plummet, और एक word यहाँ पर आएगा plummet. Both mean fall down. Okay, sudden fall. Okay, plummet is a huge fall or a sudden fall. Slumped is also a sudden fall. ed form use कर रहे हैं passage में, so verb की तरह use कर सकते हो इसको आप. Slump, slumped, slumping, slumps. All right, so all these words will tell you कि basically ये जो है स्लम्प्ड जो है उसका मतलब होता है anything that falls down या sits या leans back. Okay, so she slumped in his seat. Okay, or the prices slumped, इसका मतलब prices गिर गए, और she slumped in her seat मतलब lean करके बैठ गई अपनी सीट में. Okay, all right, then is sequential. Okay, sequence से आया है following a particular order. Okay, sequential का मतलब क्या होता है, anything that is sequential मतलब sequence follow कर रहा है, and it is following a particular order. Okay, sequence, a particular sequence or order, and this is also an adjective. Akin, remember akin के साथ हमेशा हम लगाते हैं akin with. Okay, sorry, akin to or akin with. Just one second. To लिखता है. Okay, akin to होता है क्योंकि it is basically akin का मतलब क्या होता है, सॉरी अबाउट दैट, आई सेड विथ. अकिन टू होता है, राइट. सो अकिन के साथ हमेशा टू लगता है क्योंकि आप देख लो इसका मतलब होता है सिमिलर. तो हमेशा जब हम सिमिलर यूज करते हैं तो सिमिलर टू यूज करते हैं, राइट. दिस इज सिमिलर टू दैट, सो अकिन टू यूज करते हैं हमेशा. प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं अकिन के साथ. बेसिकली इसके जैसा, किसी चीज के जैसा अगर हम बोलते हैं तो अकिन टू बोलते हैं. ओके, ओके, so akin to. Okay, her characters are akin to her mother, or um, uh, sh- her results were akin to the previous year's result. Okay, so nothing changed much. That means akin to matlab similar to. Okay, लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और स्लो टू दी टू एंड. ओके, सो कोई चीज बहुत लंबे समय तक खिंचता चला जाता है, रहता है या लास्ट करता है, तो उसको हम लिंगरिंग कहते हैं. या कोई बहुत देर तक रह जाता है. ओके, कोई चीज बहुत देर तक रह जाती है उसको भी लिंगर कहते हैं. ओके, सो he kept lingering around the house even when the work was done. Okay, he kept lingering around the house. That means वो he 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 was still there. Okay, he stayed there even when the work was done. Okay, so or the perfume has a lingering effect. Okay, so something that lasts for a long time. Okay, so lingering is something that lasts for a long time. All right. Okay, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनंसिएट. ये भी हम बहुत बार देखिए, इनंसिएटेड ed फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, बट इनंसिएट इज द वर्ब फॉर्म जिसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन अ प्लान और प्रिंसिपल क्लियरली और फॉर्मली. तो कोई भी प्लान या प्रिंसिपल को आप क्लियरली
और या फॉर्मली बता रहे हो, ओके। सो बेसिकली अगर हम इंग्लिश में देखें, अगर इफ यू वांट समवन टू इनंसिएट समथिंग, दैट मीन्स यू वांट समवन टू से थिंग्स क्लियरली, ओके, सो दैट पीपल गेट टू नो व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। बहुत साफ साफ शब्दों में बोलना इज टू इनंसिएट, ओके। जोर डाल के, एम्फेसिस डाल के, साफ साफ शब्दों में कहना इज टू इनंसिएट, ओके। नाउ इनंसिएट यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है? किसी प्लान को या प्रिंसिपल को फॉर्मली बताना या क्लियरली साफ साफ बताना या फॉर्मली बताना इज टू इनंसिएट, ओके। सो इनंसिएटेड, ओके। The ministers enunciated their policies, okay. So enunciated their policy plans, or their welfare plans or welfare schemes, uh, to in the parliament, okay. So enunciated is the past form, enunciate is the present form. Bleak, in the bleak midwinter, Peaky Blinders, okay. So उससे आपको याद रहना चाहिए bleak. Bleak is अगर कोई लैंड या एरिया के बारे में बात करे तो barren लैंड को बोलते हैं, right? Something that is barren मतलब completely जिसमें फसल नहीं उग सकती है, वैसे लैंड को कहते हैं bleak. अगर किसी प्लेस के बारे में बात करें तो ऐसे प्लेस जहां पर कोई नहीं रहता है, राइट? इट इज completely deserted, okay. And when we are talking about let's say bleak plan या bleak idea, okay. So depressing, mortifying, depressing, mortifying, all these are the meaning of bleak, okay. So anything that is basically a negative connotation वाला word है, तो जितने भी negative implications है of बंजर, okay, बंजर जमीन या when you feel bleak, okay, that means you're feeling very sad and empty from inside, okay. So empty house is called a bleak. Bleak and cold, okay. Bleak is completely deserted and cold, okay, and cold. All right. देन इज सकर, ओके। सकर इज, यहाँ यू आता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में स्पेलिंग में, एंड यू नहीं आता है अमेरिकन स्पेलिंग में, ओके। दैट इज इट। अमेरिकन स्पेलिंग्स हैव, अगर हम देखें कि अमेरिकन इंग्लिश जो है और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ज्यादा फर्क आता है यू का, ओके। सो कलर में बेसिकली जहां जहां यू प्रोनाउंस नहीं होता है, अमेरिकन ने क्या किया है, यू को हटा ही दिया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कलर, ओके। कलर में भी कलर, नेबर, ऑल दीज वर्ड्स में यू आता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में स्पेलिंग में, एंड अमेरिकन स्पेलिंग में हटा दिया गया है, ओके। All right, so give assistance or aid to. Succor is to give assistance or aid to, basically to help someone, okay? So provide support, give assistance to, किसी को support provide करना is, या aid provide करना या help provide करना is succor, okay? Not the sucker for pain, okay. I'm a sucker for pain, that is a different sucker, okay. So give assistance to or aid to is the meaning of sucker, okay. प्रोक्लेम इज, प्रोक्लेम करना मतलब अनाउंस कर देना ऑफिशियली और पब्लिकली, पब्लिकली अनाउंस कर देना या ऑफिशियली अनाउंस कर देना को प्रोक्लेम कहते हैं, ओके। प्रोक्लेम कर देना, ही प्रोक्लेम्ड हिज लव, लव फॉर हर, ओके। सो प्रोक्लेम कर देना मतलब अनाउंस कर देना, ठीक है। प्रोक्लेम, ओके, अनाउंस, अगेन अ वर्ब, सकर इज ऑल्सो वर्ब। इंसुलेशन, आपको साइंटिफिक पता होगा, इंसुलेट करना मतलब किसी चीज को, इंसुलेशन प्रोवाइड करना किसी चीज को इज बेसिकली, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हीट, लाइट एंड ऑल दैट, ओके। सो दैट इज टू इंसुलेट। बट अगर सेम चीज देखा जाए इन सिचुएशनल या कॉनोटेशन यूज, अगर इंसुलेशन का देखा जाए तो इट इज बेसिकली किसी चीज को हार्म से प्रोटेक्ट, हानि से प्रोटेक्ट करना या हार्मफुल सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन, ओके, इंसुलेशन। ओके, नाउ एबिंग, एबिंग इज द लास्ट वर्ड। एबिंग आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन ये क्या है, एब है, ओके। एब्स एंड फ्लोज, ओके, एब्स एंड
फ्लोज जनरली हम बोलते हैं टाइडल वेव्स के बारे में, जब पानी आगे और पीछे जाती है, ओके, सो उसको एब्स एंड फ्लोज कहते हैं, ओके। सो आगे पीछे जाना कोई चीज का, और अगर एब कर रही है कोई चीज, ठीक है, इट बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग, ओके, या डिसअपियर। सो एब करना मतलब पीछे जाना, रिसीड करना, ओके, एंड फ्लो करना आगे आना, ओके। सो एब करना कोई चीज अगर फिजिकल या इमोशनल चीज की बात करें, सो इफ समथिंग इज एबिंग, दैट मीन्स वो कम होती जा रही है या धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रही है, ओके, दैट इज एबिंग। सो एब्स। सब तो हमने कौन कौन से वर्ड किए, हमने किए सबड्यूड, स्लम्प्ड, सीक्वेंशियल, अकिन, लिंगरिंग, इनंसिएटेड, ब्लीक, sucker, proclaim, insulation and ebbing. Let's read the sentences now. Alpesh, good idea. I can do that, but that will take a lot of effort. Okay, so each question, चार question मुझे, I will have to. Okay, I can do that. ठीक है, अल्पेश, I will try doing that. जब भी possible होगा मैं पोल conduct कर दूंगी on the रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, लेकिन उसमें एक पर्पस उससे सॉल्व नहीं हो पाता है कि अगर मैं आंसर्स, अगर पोल्स कंडक्ट कराएं हम फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, दैट यू विल नॉट बी राइटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वंस यू हैव गॉन रॉन्ग विथ ऑप्शंस में। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर हम पोल्स करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं छोड़ दे, दैट इज टू राइट द एक्सप्लेनेशन of each option। ये वाला step बिल्कुल miss out नहीं करना, okay? So make sure that you are writing the explanation on your own, okay? Before you get to see the passage. Okay. Anne Frank was a subdued type of girl in her young age. Very nice, Alpesh. Good job. Mehak, my score slumped in the last mock. Very nice, Mehak. Very nice. The color in the lobby is subdued. Okay, so in this case, आप color के लिए जब use करते हैं तो basically कम हो जाना color का, या yes, basically come bright ho jana is subdue. Okay, so the color in the lobby is subdued. Very nice, Hivan. Good job. India's economy subdued in corona outbreak. Very nice, Vaishnavi. Good job. Before my call, she was already in a subdued mood. That's why I asked her for a date. Oh, so you were doing a favor on her, Truranga. Pehle batana tha. Very nice, Truranga. Mehak, her scores are slumping sequentially. Very nice, Mehak. Scores and marks. Alpesh, Spider-Man shooted his web towards his girlfriend. As she slumped down the tower, his web connected, but it was too late. Very nice, Alpesh. Good job. Slumped. Mehak, she is akin to me in this perspective. Very nice, Mehak. Good job. Simple as that. He saw the driver slumped over the wheel. He saw the driver slump over the wheel. Okay, slump over the wheel, not slumped over the wheel. Okay, so he saw the driver slumped over the wheel. Okay, okay. But how? Okay. All right. Good job, Hivan. Vaishnavi, when I was suffering from fever, then at that time, my health had slumped. Very nice, Vaishnavi. Uh, when you have a bad day, it seems like the day is lingering. Yes, Mehak, I know. Just doesn't go fast as it should. Nishita, after Russian war, the stock market subdued. Very nice, Nishita. Good job. My health slumped after a long illness. Very nice, Riranga. Kirti, I wish I could be akin to my friend in social skills. Very nice, Kirti. Aditya, cats are akin to tigers. Very nice. Ishant, I was leaning backwards in my seat when suddenly it slumped. Wow, nice, everyone. Good job. Nishita, before 2 years, the price of Air India slumped just like my issue. Okay, before 2 years, you don't say it like that.
previous to the couple of years, okay? Previous to the couple of years or before the last 2 years, okay? Previously to the last 2 years, okay? Previously to the last 2 years, okay? But good sentence, Nishita, good job. Alpesh, sequential attempts to a competitive exam depresses me. The feeling of failure lingers as well. Yes, Alpesh, I know what happens, and but remember, failure is the greatest teacher. Remember, Master Yoda said when we were discussing that um, about teaching. Okay, so teaching everything's greatest teacher failure is, right? So greatest teacher failure is, okay. So remember that. Uh, but I know it feels really bad. Attempts after attempts, and you're not getting through anywhere. It is something that brings your morale down. लेकिन tension नहीं लेने का अपने okay, Vaishnavi, topics of English and logical are akin to sequential, akin to sequential passages, okay? Akin to sequential passages, okay? Uh, are sequential, okay? Topics of English and logical are akin to each other in this case, okay? Logical are akin to sequential understanding. Okay, so something is missing over here क्योंकि sequential adjective है. आप adjective से sentence खत्म नहीं कर सकते हो, right? So that's why यहाँ पर कुछ और आना चाहिए. Okay, Vaishnavi? But fantastic. Ishant, I was leaning backwards on my seat when suddenly it slumped. Very nice, Ishant. Good job. As I was tired, I slumped in my bed. Okay, you always whenever bed की बात की जाती है, तो you sleep in bed. Okay, you don't sleep on bed. Okay, remember that you sleep in the bed, not on the bed. All right, good sentence though, Aditya. Good job, ma'am. Could you please enunciate what is a whip? Okay. Is this really a question or Mehak, or you are just making a sentence? I'm confused, but I will still give you the answer. Whip something is to okay, whip out. Okay, so आप फेंटते हैं, that is also called a whip. Okay, so when you are whipping something, you are basically क्या कर रहे हैं? आप blend करने के लिए blend करने की कोशिश कर रहे हैं. So whipped cream, that's why it is called whipped cream, because you have it has been whipped, मतलब बहुत ज्यादा उसको फेंटा गया है. Okay, so whip is that. अगर वर्ब फॉर्म में यूज करें, ओके, सो टू ब्लेंड समथिंग थरोली इज टू whip समथिंग, ओके. अगर हम बात करें एक नाउन की एज द whip, इट्स बेसिकली वो जिसे हम पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में. अरे दिस इज अ whip, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? दिस इज अ whip, राइट? जिससे मारा जाता है लोगों को, राइट? दूर से ही यू कैन शैक, जिसे बैल गाड़ी चलाते टाइम मारते हैं. ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ whip. ओके, सो these are the two meanings. Mehak, I hope I answered your question. Himan, the weather can be quite bleak on the coast. Very nice, Himan. Good job. In exam, board exam, they sequential for balance everything. In board exams, they sequence questions. The questions are sequenced so as to balance everything. So as to balance everything. Good job, Nishita. You always enunciate everything very well. Thank you, Kirti. Good job. But enunciates नहीं होगा. You के साथ हमेशा enunciate होता है. Okay. Good job. Alpesh, yes, it's a Shelby tradition for the funerals. So negative feeling. Yes. In the bleak midwinter, they say. Right. Uh, Vaishnavi, Rajasthan's land are bleak. Rajasthan's lands are bleak. Very nice, Vaishnavi, but not really true. That's what I also used to think after I lived there for 2 years. I know it is not that bleak. Places, yes, but not all of it. Good job, Vaishnavi, though. Hello, Ria. Hello, my beautiful and lovely student, Ria.
Y you smile. Your smile is akin to the smile of most beautiful woman. Okay, who is that? Who do you consider as the most beautiful woman? Okay, and Nishita, good statement. But just that you are saying my smile is akin to another woman's smile. Okay, so एक person के बारे में बात कर रहे हो, तो in that case it is woman, not women. Okay, so women is plural, right? Hi Ashu, my heaters and friends. My heaters. Okay, I think you wanted to write my haters and friends are lingering. Okay, are lingering. Alpesh, the professor enunciated plan to rob the bank to his team. Hasta mañana me he levantado. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Okay. Yes. Good job, Alpesh. All right, Ishant. Brace your bat and team, for I know the bleak sports. Okay. Very nice. For I know the bleak sport. Okay, because you're talking about one sport. Good job, Ishant. I am saying in an enunciated way that I am next CGI. Okay, 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 Nishita. Okay, I confidently proclaim. I के साथ हमेशा S नहीं लगता है verb form में, so I confidently proclaim that I am offering the best value in the market. Very nice, Ivan. We should buy whatever you're selling then. Nishita, Gujarat area is considered as bleak as uh, Gujarat area is considered as bleak area. Really? Okay. Sentence is fine. Absolutely, Nishita. Good job. When I get subdued, none dares to talk to me. Wow, Kirti. Okay. So they because they have faced it in the past. Vaishnavi, when I asked a doubt related to English, then Vaishnavi ma'am enunciated sequentially. Very nice, Vaishnavi. Good job. Hello, Ayushi. Long time no see. Where were you? And hello, Hanaya. Long time no see either. Nishita, if you think you will bleak my beliefs, I will sucker you then. You are in a meat. I will not insulate you. I got that, Nishita. Good job. Okay. If you think you can make me bleak, okay? If you think you can make me bleak, my belief, you can bleak my beliefs. I will sucker you then, okay? And not insulate you from anything, okay? I will sucker you and not insulate you. Uh, I will sucker you to see that you are not insulated, okay, Nishita? Scooby was ebbing after seeing a monster. Very nice, Ishant. Good job. Hanaya, I think I am subdued these days as I keep slumping over and over all the time. Very nice, Hanaya. Good job. I try to spend my day in a sequential manner. If you are saying in a, then sequential manner, then, or you can say, I try to spend my day sequentially. That's it, and not in a sequentially. Good job. Kirti, Mary slumped down the stairs when she did hurry. When she hurried, okay, not did hurry. Uh, Good job, Kirti. I try plan my day sequentially. I try plan my day sequentially. Good job, Hanaya. Tomorrow I will proclaim that Nora will be my bhabhi after 19th May. Okay, tomorrow you will proclaim this. Okay. What's up becoming ये नोरा को भाभी बनाने का क्या क्या इंटरेस्ट आपको जगा है निशिता what is this new found interest of नोरा को भाभी बनाना है okay ma'am I got selected for Christ University yay Ayushi good job congratulations proud of you okay Triranga okay hi Alpesh hi Alpesh
Vaishnavi CLAT consortium proclaimed that now CLAT will happen in December every year. Very nice, Vaishnavi. Good job. Now I don't have a ebbing for maths. Okay, now I don't ebb from maths. Okay, now I don't ebb from maths. Very nice, Ishant. I am laying claim to the last piece of pizza. Very nice, very nice. But where is the word? ईशान फिर से फ्लो में आपको पिज्जा लास्ट पीस ऑफ पिज्जा में आपने फ्लो छोड़ दिया. वेयर इज द वर्ड? गाय पिज्जा के साथ आपने खा लिया. Okay, Alpesh, she succored him in his difficult times and insulated him from the basic problems. Very nice. Keeping that in mind, he proclaimed her to be his wife publicly. Very nice. Very nice. Good job. Alpesh, no. Aditya, prisoners of war were liberated and succored. Very nice. Good job. Hanaya, my laziness while expressing myself is lingering day by day as I ignore enunciation. Very nice. What a beautiful statement, Hanaya. Good job. Ashu, insulation helps in reducing heat loss and keeping the temperature comfortable inside the building. Very nice, Ashu. Good job. Scientific चले गए आप थोड़ा लेकिन ठीक है. Triranga damaged the opposite person who harm can acquire the sucker through the uh, damages done by the convict who has caused harm can acquire uh, the sucker through the path of law. Okay, good job, Triranga. Alpesh, Hanaya, the piece of land at the back of my house is particularly bleak. Very nice, Hanaya. Good job. Good job. Kirti Triranga proclaimed he is going to ask his friend for a date and he will insulate her from consequences. Okay, good job, Kirti. Okay. Hanaya, I always think of being a sucker once I start earning, even to a small group of needy ones. Very nice, Hanaya. Good job. Meg, what is a whip in political manner? Okay, so a whip in political manner is the one who keeps everyone intact. Okay, जो सबको punishment देता है. The punisher in the or the one who pulls all these wrongdoers. Okay, usko कहते हैं whip. Okay, the person who makes sure that everyone falls in line, and if someone is not falling in line, he goes to them and explains. And the consequences is the whip. Okay, the one who controls is the whip. Okay, in political manner. All right. Um, Triranga, I know that I'm a good boyfriend, but मैं क्या करूँ if she did not proclaim her intentions? Yes, that's not your fault. You are a very good boyfriend, I believe. I believe when you say that. Ishan, look at you, sucker ghost. That blanket works as insulation. Okay, so you have used the other sucker. Very nice, Ishan. Good job. Hanaya, I proclaimed my win in the nationals with a lot of emotions to my family, towards my family. Very nice, Hanaya. Good job. The waves were ebbing gently along the shoreline. Very nice, Ashu. Very nice. Aditya, I tried to enunciate my love. Then what happened, Aditya? All right. Nitin, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. फैंटास्टिक. थैंक यू नितिन. थैंक यू. अरे आपने कह दिया मुझे बहुत खुशी हो रही है. I am just trying to sucker you, Truranga, by proclaiming your schemes. Okay. So Kirti is actually helping you out. Okay. That's what she's saying.
Very nice, Kirti. Hanaya, I'm very insulated about my siblings no matter what. Yes, Hanaya, same here. I totally get it. Nishita, I don't know why people think Rajasthan is a bleak area. I have spent my childhood here, HERE, and I never felt the same. Message for who says Pani देखा है तूने yeah, every area, Nishita, for that matter, every state has a certain stereotyping that is done on the basis of a state. तो ये सब जगह होता है. Very nice, good statement, Nishita, good job. My interest in series have ebbed nowadays. Hanaya, how is that? Has it flowed towards reading? Then it's fantastic. Aditya, after losing 8 games consecutively, it was a lingering day for me. It was a lingering day for me. Okay, very nice. Um, he could feel his strengths ebbing. Very nice, Triranga. My health had deteriorated. Ashu, where is deteriorated? Slumped, you mean? My writing habit is ebbing these days, but sentence is absolutely fine. So, good, good, good. Very nice. After seeing my rank, I feel my strength ebbing. Very nice, Vaishnavi. Good job. Okay. My mock test practice is lingering every week by not giving up. Uh, my mock test practice is lingering every day. Okay, is lingering uh, every day, but practice linger nahi karta. Okay, things linger. Things as in feelings linger. Okay, feelings linger. Yeah, smell lingers. Okay, practice not that much. ठीक है तो I tried to insulate 3 stray kittens, but I wouldn't. But I couldn't, not wouldn't. Okay, Aditya. All right, Vaishnavi, ma'am, suckers, CLAT aspirants on how to prepare for CLAT. Very nice, Vaishnavi. Thank you. The role of the magistrates court and the accessibility and effectiveness of that system have an important role in bringing succor to victims. Very nice one. Good job. Uh, Nitin, okay. Oh, oh, okay. क्या हो रहा है यहाँ पर? I think my communication skills are getting better sequentially. Very nice, Kirti. Vaishnavi, when I got a serious accident, I got into a serious accident. Then my day was lingering for me. Okay, then my day was lingering for me. Very nice, Vaishnavi. Uh, Uzbekistan's land is as bleak as its landlocked nations. Very nice, Aditya. Very nice. You're reading Theodore right, these days, and I am about to complete it. John Grisham is a fantastic writer. Rest of the words are here. Plummet, जैसा कि मैंने बोला, slumped और plummet are almost the same thing. A steep and a rapid fall or drop. Okay, so कोई भी prices के बारे में जब बात करते हैं, तब prices are slumping. That means घट रही है prices. Concede का मतलब क्या होता है? Admit or agree that something is true after first denying or resisting it. Concede भी हमने बहुत बार देखा है. Concede का मतलब पहले आपने बोला नहीं 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 ये सही नहीं है, ये नहीं किया है मैंने, ये नहीं किया, एंड देन यू कंसीड टू इट, लाइक यू से यस यस मैंने किया था. ओके, दैट इज टू कंसीड. रिस्पाइट का मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ. ओके, एक छोटा सा पीरियड आता है जिसमें डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन एक छोटा सा पीरियड आपको जिसमें आप राहत की सांस लेते हो, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट. ओके, सो दिस प्रूव टू बी अ रिस्पाइट इन द रेन प्रूव टू बी रिस्पाइट for the farmers. Okay, the rain proved to be respite for the farmers. All right, faltering is losing strength or momentum.
कोई भी चीज फॉल्टर कर रहा है मतलब वो कमजोर होता जा रहा है, ओके, कमजोर होता जा रहा है इज टू फॉल्टर, ओके। underwhelming is not causing to feel any excitement or admiration. आप expect कर रहे थे, let's say कि आप क्लास में आए और आप expect कर रहे थे कि कुछ बहुत ही मजेदार होगा because people are talking about it, but when you came you just saw that there's a ma'am who is just reading words and explaining the meaning, and then she's explaining a passage. So you found it underwhelming, okay? You should not be ideally finding this underwhelming, but दैट इज अंडरवेलमिंग कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्साइटमेंट और एडमिरेशन मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत ही ढीला सा था, ओके, अंडरवेलमिंग, ओके। ओवरवेलमिंग इज टू मच, ओके, व्हेन दिस टू मच फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट या टू मच फीलिंग ऑफ समथिंग, ओके। सो ओवरवेल्म्ड व्हेन यू हैव सडन, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ इमोशन होता है, बहुत लोग आप लेट्स से इमोशनल हो रहे हैं, यू आर गेटिंग इमोशनल, देन यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, ओके, इन दैट सिचुएशन। या बहुत भीड़ है और आप बहुत देर से बातें कर रहे हैं और इंगेज कर रहे हैं, तो अगेन यू स्टार्ट फीलिंग आफ्टर सम टाइम आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करने लगते हो, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। अंडरवेल्म इज द ऑपोजिट, ओवर एंड अंडर। तो basically not causing someone to feel any excitement or admiration, okay, that is underwhelming. टर्मोइल का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। सो टर्मोइल एक दिक्कत वाला पीरियड को कहते हैं टर्मोइल, ओके। बहुत परेशानी वाला पीरियड, बहुत डिस्टर्बेंस और कंफ्यूजन वाला पीरियड, क्या होने वाला है पता नहीं आगे फ्यूचर में, बहुत अनरेस्ट अनईजीनेस सा लगने लगता है, ओके। सो दैट इज टर्मोइल। सो जनरली आप देखोगे कि यू गो थ्रू दिस फीलिंग व्हेन अगर आप लेट्स से एक पीरियड चल रहा है आपके लाइफ में वेयर यू आर जस्ट गिविंग एग्जाम्स आफ्टर एग्जाम्स, ठीक है, आप यहाँ जाके एग्जाम दे रहे हो, वहां जाके एग्जाम दे रहे हो, बस एग्जाम ही एग्जाम दे रहे हो, एंड यू डोंट नो हाउ यूर डूइंग, कोई अच्छा जा रहा है, कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, एंड दैट पीरियड यू फील अनसर्टेन क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसी में भी होगा कि नहीं, या will this be fruitful or not, okay, will this reap any profit or not. So that feeling is called a feeling of turmoil, okay. फाइनली हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, होल्ड डाउन, ओके, इज टू कीप समथिंग स्पेशली कॉस्ट एट अ लो लेवल, ओके। कॉस्ट को पर्टिकुलरली, लेकिन कोई भी चीज को पकड़ के रखना, ओके, नीचे रखना, दबा के नीचे रखना, इज टू होल्ड समवन डाउन, ओके, और होल्ड समथिंग डाउन, ओके। So I held him down, or I tried to hold down the prices, okay, prices of goods, okay. So that means मैं prices of goods को दबा के रखने की कोशिश की, okay, low level पे रखने की कोशिश की, okay. So these are the words: plummet, concede, respite, faltering, underwhelming, turmoil, hold down. All right, let's look at the rest of uh, Ashu. Yes, I got married 2 years ago. It's been long time. Ages, and not that I just got married. Okay. My mom is thinking when the price of gold will plummet. Very nice, Nishita. Good job. Every mom thinks that. They're always looking at the market condition of gold. The inflation is plummeting negatively these days. Very nice, Hanaya. Good job. Your class and debate class is a respite part of my life, is the respite in my life, okay. Very nice, Nishita. Aditya, she conceded my love after a long rejection. Yay! Woohoo! Aditya. Good sentence. Hey Alpu, just watch our electricity bills plummet this month. I'm not gonna split the bill, okay. Okay. इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लमेट करा रहे हो आप, ओके मैम, ओके। द जेट burst into flames and plummeted to the ground. Very nice, Sivan, good job. Before coming to your class, I was thinking that this class might be faltering, but I was wrong. Very nice, Nishita. Very nice, very nice, Nishita. uh,
I never feel underwhelming for my math class. I never feel underwhelmed for my maths class. Good to know, Nishita. Glad that you're liking maths these days. Diesel price in Dubai is plummeting. Very nice, Vaishnavi. Good job. I always used to feel underwhelmed. Okay, underwhelming यहाँ पर use किए हैं as an adjective. Okay, but you can if you're using it as a verb to underwhelm on my birthday by my family. I always used to feel underwhelmed on my birthday by my family. वेरी नाइस कीर्ति एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट एंड क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं अपने से और अपने फैमिली से एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी ठीक है रिमेम्बर दैट कि आप जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी आप एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दो ओके सारे प्रॉब्लम्स का अगर आप एक्सपेक्ट नहीं देखोगे कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए होते हैं क्योंकि हम कुछ उम्मीद लगाते हैं किसी पर्सन से या किसी थिंग से कि ये ऐसा होगा वाह वाह बहुत मजा आएगा बट देन बट नहीं मजा आता है या वैसा नहीं लगता है एक्सपेक्टेशन पे खरा कोई नहीं उतरता है देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट अंडरवेल्म अंडरवेलमिंग फीलिंग ओके सो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है ओके I am going through a turmoil in my life. Very nice, Mehak. I hope it recedes. Okay. Truranga, I had to concede the logic of this because that logic had given by our editorial man. I had to concede to the logic of this because the logic was given by our editorial man. मेरा नाम ही रख दिया editorial man. Truranga नाम तो ले लो. Okay, good job. When my father asks me, "Do you want to eat pizza or momos?" I feel a turmoil, okay, brewing inside me. Very nice. Pizza or momos? Momos. Definitely Nishita should go for momos. Vrindapriya, a week before, hi, by the way, welcome. A week before there was a plummet in Tata shares. A week ago, there was a plummet in the Tata shares. Very nice, Vrindapriya. Hanaya, 9 to 4 is a period of respite at home. Very nice. Good job, Hanaya. Uh, I love to hold down my enemy. 9 to 4 sounds like a teacher's timing. Okay. I'm trying to hold my patience down. Okay. I'm trying to hold my patience down. Very nice, Mehak. Good job. After finishing my exams, I will feel respite. Very nice, Vaishnavi. Well, I had no respite from the demands of my children. Oh my God, Truranga. You baby having a baby. Ishant, thanks to my college, my life has become a roller coaster of turmoil. Very nice, Ishant. Good job. Sakshi, hi. My elder sister always tries to hold me down. I feel bad for you. Okay. Kirti, my father gets in a turmoil after he gets messed up with my mother. My father gets in a turmoil after he messes with my mother. Okay, messes with my mother, not gets messed up by my mother. Uh, Again, messed up by my mother. Okay, not with. I always get a very nice, Kirti, good job. I always get faltered in front of my mother. Faltered. I always get faltered. ED hoga. Very nice, Anaya. After studying the whole day, I feel underwhelmed for another class. Very nice, Vaishnavi. Good job. I totally understand. I spend much of my time at the shop, wandering through the aisles, faltering, never knowing what to buy. That's why I need your suggestion. Please be my shopping partner, dear. What a lovely, it was almost a lovely sentence, okay? It was almost a lovely sentence. Good job, Truranga. The clock was ticking on the emotional turmoil time tomb, time bomb. All right, yes, Ivan, good job. Ashu,
The movie received mixed reviews and was underwhelming for many viewers. Very nice. Good job, Ashu. Vrindapriya. Wars are turmoil for every country. Very nice. Good job. I usually feel underwhelmed while meeting few people in my life. While meeting a few people in my life, as in no people. Okay, so a few. Hanaya. Good job. Okay, I concede that Nora is my bhabhi and I will be the next CGI. And Alpesh and Triranga are eating food and don't give the gifts also to Ishan because I was doing the same with them. Oh my God, Nishita. You included everyone in the conversation. You included everyone that you know in the conversation. Bhabhi bhi aa gaye, Alpesh bhi aa gaya, Ishant bhi aa gaya. Everyone is there. आपके ambitions भी आ गए अल्पेश और त्रिरंगा खाना भी खा रहे हैं. Okay, very nice. Kirti, Sunday is a respite for me after a hectic week. Very nice, Kirti. Gulab Jamun single-handedly holds down all the sweets. Very nice, Ishant. Good job. Hands down, you. This statement is true. All right, Vaishnavi, I never feel faltered after attending your class. Faltered. I never feel faltered. Adjective ing form है. So remember, दोनों का underwhelming और faltered दोनों में ed लगेगा. Okay, when you are using it as a verb. Faltered. At the performance, I saw the first half was rather hollow and underwhelming. The performance that I saw yesterday or day before yesterday, the first half was rather hollow and underwhelming. Very nice one. Good job. Sometimes I feel sometimes I feel turmoil thinking about my future. I feel turmoil thinking about my future. Very nice, Akshi. Everybody does. No need to worry. At the performance, I saw the first half was rather hollow and underwhelming. ये मैंने पढ़ लिया. Everybody does इसका मतलब नहीं होता है कि मैं बोल रही हूँ कि एक normal scenario है. I'm just saying that you are at a point of time in life जहाँ पर you will be thinking about your future. And if you are worrying about your future, that means आपका future set है. Good job. If you are worried about your future, तब आप definitely कुछ ना कुछ कर ही लोगे life में. जो लोग नहीं चिंता करते अपने फ्यूचर के बारे में जो होगा देखा जाएगा ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता है ओके सो बी हैप्पी दैट यू आर वरीड इट्स अ गुड टर्मोइल दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से RBI has been holding down the inflation, giving respite, but that's not going to stay forever. RBI will soon be faltering and underwhelming middle class people into turmoil. Very nice, Alpesh. Good job. Very nice. My mother's habit to hold down the daily expenses really annoys me. Very nice, Kirti. Aditya, three girls rejected me and I felt underwhelmed. Oh my God, Aditya, I feel sorry for you. कोई नहीं, होता है. Rejection is part of life. The more you get rejected, the more you grow. So ask more girls to reject you. Okay, Triranga, Alpesh's marriage was in turmoil, but at the situation, Nish, Alpesh's ex, and me enjoyed our butterscotch ice cream in his marriage with a savage mentality. Very okay, Nish. I don't know who Nish is. Triranga, good job. Anyway, Meg, finally, my cousin conceded that ghost doesn't exist. Uh, it took uh, it took me a fortnight to enunciate this, but the sad part is now horror stories will be underwhelming for them. Very nice, Mehak. Good job. During debate, when Ishan said that I have one question for Nishita, I feel turmoil and Alpesh can relate this. Very nice, Nishita. Good job. Amazon has held down their prices by giving a good discount on electronics. Very nice, Hanaya. Good job. I conceded the demands of my father and mother to help them in cleaning. Very nice. In the midst of chaos, being with you brings me respite and tranquility. Very nice. Explain करना है इसको आशु. Okay, so basically, in the midst of chaos, ये जितनी भी उथल पुथल चीजें हो रही हैं, इसके बीच में अगर मैं आपके साथ रहता हूँ, तो मुझे बहुत शांति और
सुकून की फीलिंग आती है, ओके, राहत और चैन चैन की फीलिंग आती है, ओके, दैट इज द मीनिंग, आशु. I have I have held down the price of my tab, so that I'll be able to sell it as soon as possible. Very nice. All right. So these were the words. अब हम चलते हैं quickly towards the important announcements. Now, if you want to edge closer to your preparation, do subscribe to 6 months package that you are getting, जिसमें आपको 1 month extension मिल रहा है. If you use my code Vaishnavi 10, then you get additional 5% discount, 5% off मिलेगा flat आपको अपने subscription पे. So you can use my code to get 5% off, and 6 months अगर आप period का subscription लेते हैं, which would be ideal for you, क्योंकि उसके साथ आपको 7 महीने almost बचे हुए हैं और 7 महीने का पूरा ये package है. So this is valid only till 31st May. अब क्लैट ऑल इंडिया क्लैट स्कॉलरशिप मॉक आ गया है जो 21st मई को हो रहा है. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप विच इज वर्थ 1.25 crores. So you can win the value of 1.25 crore worth of scholarship. All right. So if you give the May 21st wala mock, okay, do give the mock. फ्लैट प्रिंटेड मॉक टेस्ट आ गए हैं जिसमें आपको 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड दिस विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर डोर स्टेप. सो दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल आइकॉनिक एंड 9 month एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस. जुलाई में आ रहा है, सॉरी जून में आ रहा है. सो कमिंग सून. This is our May month ka calendar. All these exams are going to take place, and the scholarship one is right here. Okay, so make sure that you do not miss out. Even if you're not prepared worth a scholarship, तो भी आप ये mock test जरूर देना, because now is the time कि आपको एक mock per week देना ही देना है. Okay. All right. So Level Up is a foundational batch जो CLAT, AILET, MHCET, LSAT, SLAT के लिए 2024 के लिए आपको prepare करेगा. I am taking English language in this batch. तो अगर आपको मेरे sessions अच्छे लगते हैं, then do subscribe to this batch, and you can use my code Vaishnavi 10 to get flat 5% discount on your subscription. Then there is another batch, the Warriors, जो again CLAT 2024 के aspirants के लिए. I am taking English language in this batch. So अगर आपको मेरे classes अच्छे लगते हैं तो use my code to unlock 5% discount on your subscription. Okay. All right. Crack CUET PG Law DU LLB in 30 days is an intensive course. For DU LLB के लिए intensive course है जो April 27 से start हो गया है. So enroll now. All right, let's get started with the editorial. आज का editorial शुरू करते हैं. जय श्री राम. आशु आप तब से हो, अभी जय श्री राम बोल रहे हो. All right. Okay, so editorial शुरू करते हैं. Bring your markers and everything outside. Highlighters, not markers, highlighters outside. Let's get started with the editorial. Okay, so सबसे पहले क्या है? Tripping trade. Okay, tripping trade is the headline that is given. India must not excessively rely on a few large markets. Okay, तो क्या है? This is the conclusion. ये क्या बन गया? हमारा conclusion बन गया. Author क्या बोल रहा है कि इंडिया को बहुत ज्यादा रिलाई किस चीज पे नहीं करना है, एक्सेसिवली रिलाई किस चीज पे नहीं करना है, एक सर्टेन फ्यू लार्ज मार्केट्स पे भरोसा बस उन्हीं पे नहीं टिका के रखना है. ओके, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. ओके, सो बेसिकली ऑथर बोल रहा है कि मस्ट नॉट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दिस बिकम्स द कंक्लूजन. पढ़ते हैं पैसेज, बढ़ते पैसेज की तरफ. सो लेट्स सी द मेन आइडिया. दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू अ सबड्यूड स्टार्ट ऑन ट्रेड फ्रंट. सो दिस बिकम्स द मेन आइडिया. ठीक है, कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा है कि स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ. ओके, किस सेंस में अच्छा नहीं हुआ? ट्रेड के सेंस में हमारा इस साल का फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, सो अब यही है मेन आइडिया, बस इतना ही है मेन आइडिया. ओके, अब इसके बाद जो भी है, सो इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, सबड्यूड है. सो मोस्टली क्या दिखाएगा ऑथर अब इसके बाद कि कैसे कैसे सारे जितने भी ट्रेड्स हैं सारे नेगेटिव में जा रहे हैं.
राइट, सारे नीचे गिर रहे हैं। सो आप देखो, आप नंबर्स के ऊपर नंबर्स ही बस है, तो दीज आर समथिंग दैट यू कैन क्लियरली स्किम, आप बस स्किम करते जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है। Goods exported slumped to $34.6 billion in April, the lowest since last October, the worst month for outbound shipment in 2022-23. Okay, so goods का गुड्स कहाँ हो गए, नीचे गिर गए। ओके, एंड दिस इज द वर्स्ट मंथ। ओके, सो पहले ही बता दे रहा आपको कि ये जो $34.6 billion है, ये अच्छा है कि खराब है, तो बोल रहा है खराब है। ओके, this was the third successive contraction in exports and 12.7% below the April's numbers. So you don't have to read it again. I told you ये बस skim करना है, तो ये third successive contraction है। okay, मतलब basically नीचे ही चला जा रहा है। Imports shrank by sharper 14% to trip to a 15-month low of under $50 billion. Again, this is talking about imports. Imports भी नीचे गए हैं। स्लोइंग आपको बस देखना है क्या क्या नीचे जा रहे हो, कि कितना परसेंटेज, कितना, कहाँ से कब तक, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये तो आपको पढ़ के मिल ही जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ओके, सो यू जस्ट हैव टू नो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। ओके, एंड जैसा स्टार्ट हुआ है मोस्टली चीजें घट ही रही है, राइट। सो आपको बस ये देखना है क्या क्या घट रहा है। ओके, सो इंपोर्ट घट गया है, वर्स्ट आउटबाउंड शिपमेंट हो गया है, दीज आर द टू थिंग्स। ओके, अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी हैड बीन हर्टिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू द सेकेंड हाफ ऑफ 22-23। तो पहले ही से सेकेंड हाफ जो 22 और 23 का था, उसमें उसमें क्या हो गया है, स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी हो गया है, तो वो ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, विथ डिक्लाइन इन 4 of 6 months, तो डिक्लाइन ही हुआ है, छह में से 4 महीने डिक्लाइन ही हुआ है। बट अप्रैल इनिशियल एस्टिमेट्स आर ट्रबलिंग, नॉट जस्ट बिकॉज, लेकिन अप्रैल में जो हो रहा है, ठीक है, 3 मंथ, तो 6 महीने से 3 मंथ में डिक्लाइन ही हो रहा है, लेकिन अप्रैल का जो एस्टिमेट है दैट इज ट्रबलिंग। अब क्यों ट्रबलिंग है यही बताएगा आपको पूरे पैसेज में, आगे के लाइंस में। Not just because they represent the steepest fall in the recent months, but also signal a sudden shift in sequential momentum akin to use of emergency handbrakes। okay, तो इसीलिए बस ट्रबलिंग नहीं है अप्रैल का महीना, क्योंकि ये बहुत शार्प डिक्लाइन आया है, इसमें बहुत नीचे गिरा है रीसेंट मंथ्स में, बस इसीलिए नहीं, लेकिन ऐसा डिक्लाइन आया है कि ये जो सडन सीक्वेंशियल मोमेंटम हुआ है, कि एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, गिर रहे हैं चीजें। ओके, मार्केट एक के बाद एक गिर रहा है, ट्रेडिंग एक के बाद एक गिर रहा है, ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें इमरजेंसी हैंड ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि अप्रैल बहुत क्रिटिकल हो गया है। ओके, सो दिस इज वाई इट हैज बिकम क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक बीच में। ओके, सो दिस बिकम्स क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट, बस ये आपको स्किम नहीं करना है। बाकी अगेन, दिस मार्च डिस्पाइट लिंगरिंग ग्लोबल डिमांड वीकनेस, export had hit a 9-month high of nearly $42 billion while imports were $60 billion। okay, तो मार्च में ग्लोबल डिमांड वीकेंड हो गया था, उसमें वीकेंड ग्लोबल डिमांड में बहुत ज्यादा कमी आ गया था, लेकिन भी 9 मंथ हाई हिट किया था एक्सपोर्ट। ओके, $42 बिलियन के साथ, और इंपोर्ट $60 बिलियन का था। The new foreign trade policy enunciated a $2 trillion exports goal to be achieved in 7 years। और अब नया टॉपिक ऑथर शुरू कर दिया है यहाँ पर, कि जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो क्लियरली बताया है, अनाउंस किया गया कि $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए, अचीव होना चाहिए 7 साल में, अगले 7 साल में। ओके, अब इसके बारे में ऑथर बोलेगा, its first month of implementation could not have been off the shakier start। okay, to a shakier start, मतलब इसका जो पहला मंथ ही देखा जाए, ये जो पॉलिसी की $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, इसका जो सबसे पहला मंथ है उसमें उससे खराब स्टार्ट, उससे शेकी स्टार्ट किसी और चीज का नहीं हो सकता। ओके, दी ऑथर इज सेइंग, अब इसका एग्जाम्पल देगा। अगेन दिस टेल्स अस कि स्टार्ट उसका बहुत खराब हुआ था। अगेन एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल नॉट इम्पोर्टेंट। The prospect of last year's healthy 14.7 growth that lifted total exports to about $776 billion being replicated in 23-24 looks bleak already। और यही वाला जो ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट किया था, ये जो ग्रोथ हुआ था, हेल्दी ग्रोथ हुआ था 14.7% का, विच
अमाउंट्स टू, ओके, लिफ्टेड अ टोटल एक्सपोर्ट, इतना सारा एक्सपोर्ट लिफ्ट कर दिया था $766 बिलियन का। अब इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई 23-24 में, लेकिन इसका बहुत ही खराब स्टार्ट, बहुत ही सैड स्टेट देखा जा रहा है ऑलरेडी। ओके, सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आई डिड नॉट justify this one. Okay, anyway. Okay, so now the author is saying that one may draw some succor from the trade deficit easing to a 20-month low. Okay, so कोई some may draw some succor from trade deficit. तो कुछ कुछ लोगों को respite मिलेगा, उनको कुछ help मिलेगा ये जो ईज होने के लिए, कि ये जो 20 मंथ का लो डेफिसिट हो गया था, इसको अचीव करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कुछ लोगों को। लेकिन but managing the trade deficit cannot be the goal of for policy makers. Okay, तो ये जो ट्रेड में डेफिसिट आया है, ये तो मैनेज होने का गोल नहीं रख सकते पॉलिसी मेकर्स। ओके, falling imports also indicates that domestic demands in demand India's proclaimed insulation against global headwinds is ebbing. तो basically क्या बोल रहा है ऑथर कि लेकिन अगर हम देखें import का भी, falling imports also indicate that domestic demand India's proclaimed insulation against global headwinds is ebbing. तो ये जो import तो फॉल हो रहा है, राइट? ये क्या दिखाता है कि ये जो डोमेस्टिक डिमांड है, फॉलिंग इंपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, जो इंपोर्ट में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, उससे हमें ये भी दिखता है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है, जो इंडिया ने प्रोक्लेम किया था कि ये इंसुलेट करेगा हमें बाकी के ग्लोबल प्रॉब्लम से, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे हमें बचाएगा अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे और डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे, राइट? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सो द ऑथर इज सेइंग कि दैट इज ऑल्सो नॉट helping. Okay, that is also not helping, that is also disappearing. Moreover, when imports of petroleum down 14% and gems and jewelry plummet, they also affect exports of value added end products. Okay, तो अगर बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मोर ओवर अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे पेट्रोलियम का, तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि इंपोर्ट अगर हम कम करेंगे पेट्रोलियम का, जेम्स का एंड ज्वेलरीज का, तो उससे एक्सपोर्ट में भी जो प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें भी गिरावट हो जाती है, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट एज वेल। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे जेम्स तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे ज्वेलरी। ओके, सो that is what the author is saying. Petroleum exports shrank 17.5% in April, while jewelry shipment, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल कि पेट्रोलियम और ज्वेलरी दोनों ही मार्केट में कम हुआ है, उनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 10 months, इवन एज अदर जॉब्स क्रिएटर्स सच एज टेक्सटाइल्स हैव बीन हिट हार्ड। तो बस ये ज्वेलरी और पेट्रोलियम के केस में नहीं हुआ है, बाकी टेक्सटाइल्स के केस में भी they have also been hit. Okay, that commodity prices have cooled from last year is only one reason for the shrinking trade basket. Okay, तो क्या एक ही रीजन है ट्रेड बास्केट श्रिंक करने का? क्योंकि द कमोडिटी प्राइसेस क्या हो गया है, कूल हो गया है, पिछले साल से मतलब नीचे गिरा है। तो यही बस एक रीजन है कि वन रीजन फॉर श्रिंकिंग ट्रेड बास्केट, और ये एक रीजन है कि हमारा ट्रेड जो है वो श्रिंक कर रहा है। ओके, officials concede officials what officials concede what okay, officials concede again for the third time. There does not seem to be any immediate respite likely from faltering global demands. तो और officials agree कर रहे, मान रहे ये बात को कि अभी तो कोई इसमें हमें ये नहीं मिलने वाला है, कोई चैन की सांस या राहत की सांस नहीं मिलने वाली है अभी। सो ऑफिशियल्स भी यही कह रहे हैं। चाइनाज ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी मे हैव prompted a global trade growth forecast hike for 2023 from the WTO, but recent Chinese data have been underwhelming about the recovery momentum. तो बेसिकली चाइना का इन्होंने जो ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी अपना
बढ़ाया है, एक्सपैंड किया है, ओपन किया है। इससे इससे फोरकास्ट हुआ था क्या कि एक हाइक आएगा फ्रॉम 1 टू 1.7%, ग्लोबल हाइक तो आया है 2023 में, लेकिन रीसेंट चाइना का जो डेटा है वो भी अंडरवेलमिंग है, रिकवरी मोमेंटम उसका बहुत कमजोर है। ओके, रिलक्टेंट यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स आर ऑल ओनली एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप गुड्स ordered by September for festive seasons, while service exports that have held up through the recent trade turmoils may slow too. Okay, so basically ये जो बस फेस्टिव सीजन के लिए इन्होंने जल्दी कर देने बोला है ट्रेड बाय सितंबर फॉर फेस्टिव सीजन ओनली, लेकिन बाकी सब चीजों में नहीं देखा जाएगा कि ये कोई स्लो ही चलेगा ट्रेड। ओके, बाकी सब चीजों में इंडिया मस्ट यूज, नाउ दिस इज द कंक्लूजन फाइनली, कि ऑथर क्या बोल रहा है कंक्लूजन, कि इंडिया मस्ट यूज दिस स्लैक पीरियड to review its overall trade stance, the reliance on a few large markets, and pursue greater integration with global value chains and multilateral trading arrangement. There, these would yield better outcomes than fresh measures to hold down the import bill. तो ये measure ज्यादा काम करेगी. So finally the author is giving his solution suggestion कि क्या क्या करना चाहिए इंडिया को. एक तो ये पूरा जो स्लैक पीरियड है, ये जो रेस्टिंग पीरियड है, ये जो बुरा पीरियड चल रहा है, इसमें इंडिया को अपना गेम को एक बार फिर से देखना चाहिए. ओके, कि कितना रिलाई कर रहा है लार्ज मार्केट्स पे, उसको कम करना चाहिए, और ग्लोबल ट्रेड मार्केट से इंटीग्रेशन ज्यादा करना चाहिए, उनसे मिलजुल के और ट्रेड बढ़ाना चाहिए, और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग करनी चाहिए, इधर उधर उधर से इधर, इधर से उधर. ओके, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स भी करनी चाहिए. दीज, और इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा दैन कि बस इंपोर्ट बिल को अगर ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा ये तरीका होगा. ऑलराइट, दिस इज द कंक्लूजन. And this was the whole passage, entire passage. I hope this is clear. So what would be the tone of the passage? क्या होगा tone आज के passage का? See, quite easy. Most of the things are things that you just have to quickly read through. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में तो पूरा ही ऑलमोस्ट ऐसा चीज है जो आपको बस क्विकली स्किम करना है. ओके, एंड मेन आइडिया भी बहुत छोटा सा है कि दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ टू अ सबड्यूड स्टार्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट. ट्रेड बहुत अच्छा नहीं चल रहा, हैप्पी न्यूज तो नहीं दे रहा ऑथर. ओके, एंड उसके बाद रीजंस बोल रहा है कि क्या क्या रीजंस है कि ऑथर ऐसा बोल रहा है. सब जगह की ट्रेड इज बेसिकली फॉलिंग डाउन. ओके, and the author is giving solutions in the conclusion कि क्या करना चाहिए. uh, Aditya, read your sentence. Where is your sentence? My employer have held down my salary and that was a turmoil for me. Very nice. Aditya, I read your sentence. Now informative तो नहीं होगा. Okay, informative कह सकते हैं. Okay, informative कह सकते हैं, but the author is talking about something नेगेटिव, राइट? नेगेटिव की बात कर रहा है. क्रिटिकल भी नहीं है, कि ऑथर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि क्या कर दिया इन्होंने. ये तो बोल ही रहा है ऑथर कि पूरा ग्लोबल मार्केट ऐसे स्लो चल रहा है, तो इसीलिए अभी स्लो ही चलेगा. ओके, बहुत कुछ नहीं कर सकते इस बारे में. सो द ऑथर इज नॉट बीइंग वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, द ऑथर इज जस्ट बीइंग होपलेस अबाउट द फ्यूचर, राइट? पेसिमिस्टिक, कि ऐसे तो नहीं काम चलेगा. ओके, पेसिमिस्टिक हो रहा है ऑथर, क्योंकि द ऑथर इज बीइंग होपलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ट्रेडिंग. ठीक है, कि ट्रिप कर रहा है, मतलब सडन ट्रेड फॉल कर गया. ओके, एंड दिस विल नॉट बी जिस मेथड से चल रहे, उस मेथड, वो मेथड तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है. सो होपलेस है अबाउट द फ्यूचर द ऑथर, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी पेसिमिस्टिक. या आप कह सकते हैं skeptical. Okay, skeptical, आप skeptical भी कह सकते हैं, या तो the author is concerned, perturbed. हमेशा the author is concerned. Okay, so perturbed. So all these could be the tone of today's passage, and that's it, everyone. Thank you, boys and girls, for attending the session. I will see you again in the next class. Adios, auf Wiedersehen, das Vidania, tschüss, namaskar, alvida. नमस्कार क्यों बोला मैंने? नमस्कार, अलविदा. सायोनारा, बाय. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
और वाह मैं हमेशा भूल जाती हूँ। यस, और वाह, थैंक यू वेरी मच। Auf Wiedersehen, वेरी नाइस आकर्षण। टेलीग्राम चैनल लिंक आशु, अगर आप स्टार्टिंग यही वीडियो को अगर आप स्टार्ट में देखोगे तो स्टार्ट में मैंने सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम लिंक बताती हूँ, तो आप वो क्यूआर कोड स्कैन कर लेना या सिंपली मेरा वो नेम टाइप कर लेना, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ओके, कीप ब्रीथिंग। सखलिया, सखलिया क्या होता है?